Yes, sir. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ R&D एडवांसमेंट दिल्ली ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। लेह के कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए ये ट्रेनिंग थी। NIHA की एक टीम ने लेह में ये ट्रेनिंग दी। NIHA लगभग 30 सालों से स्टैंडर्ड बेस्ड लर्निंग एंड कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में लीड बनी हुई है। वो इस आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अहम स्किल को सीखने और तैनात करने के कबल बनाना इसका मकसद है। लेह में ट्रेनिंग सेशन के आयोजन का एक अहम पहलू यह था कि लोगों को यहां के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और चैलेंज के बारे में जानकारी दी जाए। We are from National Institute of HRD and Advancement, and we are conducting this particular workshop where the people are there from the different regions, from Delhi, Mumbai, Hyderabad. They are from DRDO people are there, Lubrizol, Indian Oil Corporation. Selected this Leh because always the programs, training programs are conducted all over India at different places, and whenever in this region it was conducted, it was always at Srinagar. But after this union territory has come into existence, it was observed that at least people should be well aware about the Leh also. People are having the wrong conceptions before coming here. Various kinds of illusions are there. Various kinds of aspects relating to safety and security is there. But after landing here, the different kind of culture. We have seen here how the people are just interacting with you in the most congenial manner. Life is so smooth here. All those illusions, all those things were merely totally imaginary ones. And as far as this training part is concerned, this particular program is relating to the personal and professional growth of these government functionaries and the public sector undertaking people, in order to have their professional and personal growth, so that they can help for their organization, that we are having various kinds of sessions relating to image building, relating to leadership skills, relating to all those team building. Then the various behavioral skills are there relating to time, stress, anger. Besides that, we are going to discuss about the aspects about the sexual misconduct at workplace, which is quite relevant, which we have seen time and again. One thing or the other is happening at different places. How to take care of the same? It is very easy to see, but very difficult to follow it. But when it happens, how the people react. Before verdict is there, immediately people have already made their opinion. So in this particular program, we are just going to tell about the various aspects by which people can just gather knowledge. All these officials who have come from the different parts of Delhi, Bombay and Hyderabad, because when these people go back, they can just spread the things, not only with regard to this organizational setup, but also with regard to the Leh. As today we have seen, batch has interaction with the people outside in order to know about these aspects. But after spending 4 days here, I can very well see the time is not far that people will be regularly flocking in here, because this place is really one place where people would like to come again and again. हम लोग आने के पहला ये मन में सोच के आया था कि क्या पोजीशन रहेगी, लेकिन जैसे हम लोग आ गए वैसे हमको टूरिस्ट के पास जाने के बाद वहाँ के जो गाड़ी चलाने वाले शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, पूरे हेल्पफुल आदमी है सब लोग। और इधर आने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये इंडिया का बेस्ट हिल स्टेशन है। यहाँ के लोग, यहाँ के सब ड्राइवर लोग, यहाँ सब वातावरण अच्छा है। हमारा ट्रेनिंग के बारे में बोलने का तो ये हम मेरे ख्याल से मैं 20 साल से ये ट्रेनिंग के साथ ज्वाइन हूँ, और ये ट्रेनिंग
लेने के बाद आज के मौसम में जो की पोजीशन चल रहे, वो आगे कौन सा इंडस्ट्रियल अच्छा चलना चाहिए, आप वर्कर या मैनेजमेंट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये हमको अच्छी तरह पढ़ाता है। और इसलिए हम यहाँ पे ले आने के बाद ऐसा लगता है क्या कोई भी प्रॉब्लम चाइना और इंडिया का है ही नहीं। यहाँ के लोग सबको एक साथ जुट के काम करने के लिए, आने के लिए जो आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो लोगों के साथ मिलजुल के वातावरण एकदम